Hello everyone. Today we shall discuss question number 3 of exercise 5.1 of class 9. The question number 3 is consider two postulates given below. Given any two distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. Number 2 is there exist at least 3 points that are not on the same line. Do these postulates contain any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they follow from Euclid's postulates? Explain. ये हमारा क्वेश्चन है. तो इसका आंसर जो होगा पहले हम देख लेते हैं. फर्स्ट में जो पोस्टुलेट दिया हुआ है, कंसिडर गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी. तो इसे हम पहले सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो इसे देखने के लिए हम एक सबसे पहले इसे हम सॉल्यूशन करेंगे. सबसे पहले क्या दिया हुआ हम देख लेते हैं. क्या है? गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी. दो पॉइंट दिया हुआ ए एंड बी. राइट. ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. राइट. देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी. एक पॉइंट और है जो ए और बी के बीच में है. राइट. कहीं पर भी है, दैट इज सी. ये हमारा पॉइंट एक दिया हुआ है. ठीक है. तो ये जो नंबर 2 में क्या, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. तो सेकेंड जो सिचुएशन है, हम सपोज दो पॉइंट लेते हैं ए एंड बी, ए और बी, और एक थर्ड पॉइंट है जो ए बी का ऊपर नहीं है. राइट. नॉट ऑन द सेम लाइन. तो सपोज यहाँ पर है. जिसे क्या क्वेश्चन है, डू दिस पोस्टुलेट्स कॉन्टेन इन अनडिफाइंड टर्म्स. अनडिफाइंड टर्म्स तो जरूर है, जैसे पॉइंट है या लाइन. दो चीज़ हम अनडिफाइंड टर्म्स देख सकते हैं. जैसे पॉइंट अनडिफाइंड टर्म्स है और लाइन अनडिफाइंड टर्म्स है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन इन अनडिफाइंड टर्म्स. यस. इसका आंसर होगा यस. दिस पोस्टुलेट्स कंटेन these postulates contain undefined terms, undefined terms such as point and line, एंड लाइन. ये दोनों चीज़ हम अनडिफाइंड यहाँ पर देख पा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम देख लेते हैं. नेक्स्ट में बोला गया है, ऑल्सो डू दिस पोस्टुलेट्स कॉन्टेन अनडिफाइंड. आर दिस पोस्टुलेट्स कॉन्सिस्टेंट. कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है क्या लीगल है, क्या इसका कोई मीनिंग है, इसका कोई अर्थ है. आर दिस पोस्टुलेट्स कॉन्सिस्टेंट. तो हम बोल सकते हैं हाँ ये कॉन्सिस्टेंट है. राइट. तो हम बोल सकते दोनों पॉसिबल है, जैसे ए और बी और एक पॉइंट सी बीच में हो सकता है. और सेकेंड में दिया है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. ए बी है और सी इसका लाइन के ऊपर नहीं है. ये भी पॉसिबल हो सकता है. तो क्वेश्चन है, आर दिस पोस्टुलेट्स कॉन्सिस्टेंट. क्या लीगल है, क्या ये अर्थ, इसका कोई अर्थ है. तो हम होगा यस. These postulates are consistent. Yes, these postulates are consistent. These postulates are consistent. Consistent होगा यानी कि इसका एक मीनिंग है. राइट. Yes, these postulates are consistent because they deal with two different situations. तो डिफरेंट सिचुएशंस को हम यहाँ पर देख सकते हैं. डिफरेंट सिचुएशंस. फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, डिफरेंट सिचुएशंस एज नंबर 1 में है. क्या है नंबर 1 में? says that given 2 points A and B, there is a point C lying on the line in between them. Right. फर्स्ट में बोला गया है, says that given 2 points
given 2 points A and B, 2 points, given 2 points A and B, given 2 points A and B, there is a point C, there is a point, there is a point C lying on the line, lying on the line there is a point C, there is a point C lying on the line in between them, ये एक सिचुएशन है in between them, right? whereas in 2 दो में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि says that given 2 points A and B, you can take point C not lying on line through A and B. says that given 2 points A and B, says that given 2 points, given 2 points A and B, you can take point C not lying on the line, on the line through A and B, ये दो सिचुएशन को हमको दिया गया है. फर्स्ट में दिया says that given 2 points A and B, there is a point C lying on the line in between them. ये फर्स्ट सिचुएशन है. और सेकंड जो सिचुएशन है says that given 2 points A and B, दो पॉइंट है A and B, you can take any point C not lying on the line through A and B. और एक पॉइंट C लेना है जो लाइन का ऊपर नहीं है. तो ये दिया गया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर दीज पोस्टुलेट्स कॉन्सिस्टेंट? ये हो गया, राइट. आर दीज पोस्टुलेट्स कॉन्स्टेंट? डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स? मैंने यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स के बारे में बताया है जिसमें ये सब कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है. तो हम इसमें लिखेंगे नो. हम एक न्यू स्लाइड लेते हैं. ठीक है. ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं. नेक्स्ट है डू आर दिस पोस्टुलेट्स कॉन्सिस्टेंट? ये तो हो गया. डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स? हम लिखेंगे नो. दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो. दे नो दिस पोस्टुलेट्स do not follow Euclid's postulates. Euclid's postulate को यहाँ फॉलो नहीं करता है, राइट. However, they follow from the axiom. They follow from the axiom. Follow from the axiom that given two distinct point, ये axiom follow करता है. given two distinct points, given two distinct
distinct points, given two distinct points, there is a unique line, there is a unique line that passes from them, that there is a unique line, that passes through them, फिर से और एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी। हम दो पॉइंट है ए एंड बी, एक पॉइंट सी है जो दोनों ए बी के बीच में है, राइट। और सेकंड सिचुएशन है, देयर एग्जिस्ट ए एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। यहाँ 3 पॉइंट्स लिए हैं, एग्जिस्ट ए एंड बी और सी ऑन द लाइन ए बी नहीं है। तो यह क्वेश्चन है, डू दिस postulates contain undefined terms? Yes, these postulates contain an undefined terms such as point and line, right? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू दिस postulates contain any undefined terms? डू आर दिस postulates consistent? क्या consistent है? क्या ये लीगल है? क्या यह पॉसिबल है? या क्या ये इसका अर्थ होता है? यस, दिस postulates आर consistent बिकॉज दे डील विथ टू डिफरेंट सिचुएशन। ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, राइट। सच फर्स्ट सिचुएशन में बोला गया, सेज दैट गिवन टू पॉइंट्स ए एंड बी देयर इज ए पॉइंट सी lying on, there is a point C lying, there is a point C lying in between A and B, in between A and B, right? Number 2, ये एक सिचुएशन है एंड नंबर 2 में सिचुएशन है, says that नंबर 2 सिचुएशन है, says that there are 3 points that are not on the same line, not on the same line। इसका मतलब है 3 पॉइंट ए बी 2 पॉइंट है और सी जो पॉइंट है ये लाइन में नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू दिस postulate contain undefined, आर दिस postulates consistent? ये हो गया। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स postulate? नो, दिस postulate डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स postulate, ये फॉलो नहीं करते हैं। हाउएवर दे फॉलो फ्रॉम axiom, एक एक्सम है जिसे फॉलो करता है। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, ये एक्सम को फॉलो करता है, राइट। डियर फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।